Hello everyone, good afternoon and welcome to the Hindu editorial analysis brought to you by Unacademy, and I am Vaishnavi, your English educator who presents the Hindu editorial analysis. So I hope you can see and hear me. Why is it taking so much time? So last day of the month, we are going to be doing something that is finance related. Okay, a lot of people consider it a little boring, but the easiest one of all, editorials to understand, to gauge. Hi Ashu, hi Shreya, hello Hevan, bonjour. Uh, Good afternoon, Ashu. Somesh, namaste, and good afternoon to you too. Okay, so I think you can see as well as hear me. So, and you're back with your forehead. Yeah. Trying to get it back, but I don't think I'm getting it back anytime soon. Let's see, Somesh, how it goes. Fingers crossed. All right, so let's get started. Before we get started, let me just inform on the group that I'm live. मेरा नाक पर छोटा नाक पर है मेरा नाक पर. Hmm. Wow, Hivan is on time today. Hola. Shama, good afternoon, everybody. So let's get started with the analysis. Okay. Now remember, ये जो analysis मैं करती हूँ, okay, this analysis इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी editorials नहीं पढ़ोगे. Just one editorial you read it in detail, मतलब vocabulary के साथ आप पढ़ते हो. बाकी जितने भी editorial हैं वो आप खुद से पढ़ोगे बिना vocabulary पे ध्यान दिए. Okay. So reading नहीं रुकना चाहिए. Okay. Make sure that you do not stop reading. And I am repeating it again. No matter what we do, okay, आपको एजुकेटर कितना भी पढ़ा दे, हम आपको कितना भी सक्षम बना दे, आप जब तक खुद से नहीं करोगे रीडिंग, तब तक कुछ नहीं होने वाला. ओके, सो रीडिंग इज अ वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ योर preparation. Okay, so please do not ignore it. Take it as a habit, build it as a habit or a ritual or a custom, and make sure that you do it every day. Okay, do not stop until you give your CLAT. Okay, all right, so this is my Telegram channel. uh If you have not subscribed to my channel yet, please do subscribe to my channel. It is called Unacademy_Vaishnavi_CLAT, or ऐसे नहीं मिल रहा है तो you can scan this QR code and it'll take you straight to my channel. Ta-da! Johar, Piyush, Salamat, Salamat Wagi, and Guten Tag to you too, Piyush. Be good listeners and great readers. वाह सोमेश, वाह क्या dialogue मारा है आपने. Absolutely, absolutely. Yes, you are supposed to be good listeners but great readers. Yes. Readers, absolutely. You have to be great readers, okay? Encomium, okay, the first word is a new word. Okay, ये word हमने पहले कभी नहीं किया है. Encomium is a speech. या तो एक speech हो सकता है, या तो एक piece of writing हो सकता है that praises someone. Okay, किसी की बड़ाई कर रहा है, बहुत ज्यादा बड़ाई कर रहा है. Okay, या किसी की बहुत highly किसी के बारे में लिख रहा है. Okay, that is
that is encomium. Okay. So encomium is a noun which means a speech or a piece of writing that praises someone or something highly. Okay. किसी की बहुत बड़ाई करना या तो बोल के या तो as a speech या तो as a writing, as a piece of writing, that is encomium. Okay. आया नीतीश गया नीतीश. Yes, Somesh, I know. आप उसमें माहिर हो, I know. All right. Coming back to the next word, stoke. Okay. देखो अब generally अगर हम बात कर रहे हैं stoke a fire. Okay. जनरली आग और भड़काना या सुलगाना होता है टू स्टोक. ओके, बाय एडिंग मोर फ्यूल टू द फायर और बाय एडिंग मोर कोल टू द फायर. ओके, तो दैट इज टू स्टोक अ फायर. ओके, तो जलते रहने के लिए आप उसमें और फ्यूल या कोल ऐड करते हो. ओके, बट हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फायर, राइट? We are using it as a connotation to encourage bad ideas. Okay, or feeling in a lot of people. Okay, किसी को भड़काना, किसी का और add fuel to the fire. Okay, basically अगर किसी को bad ideas किसी के अंदर है और आप उनको और encourage कर रहे हो, हाँ यार एकदम सही कर रहे हो, यही करते जाओ. Okay, this is absolutely right what you're doing. You're stoking that person. Okay, so this is the verb form that means you can change it to stoking, stoked, stokes. Okay, और फीलिंग इन अ लॉट ऑफ पीपल. ओके, बहुत लोगों को भड़काना, उत्तेजित करना, उनके बैड आइडियाज को प्रमोट करना, दैट इज टू स्टोक समथिंग. ओके, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का. वाह, वाह वाह. Okay, then we have complacency. Okay, this is all these are new words. Okay, complacency is a very important word जो आप में नहीं आना है. Okay, this is like this is like a word which is another word for overconfidence. ठीक है, अगर आप में complacency आ जाता है, मतलब आप में एक feeling आ जा रहा है कि आप एकदम, आपको कोई चेंजेस की जरूरत ही नहीं है, आप एकदम सही हो, एकदम जितना है आप में एकदम मस्त हो, आप एकदम सही हो, परफेक्ट हो. ओके, तो आप इतना सेटिस्फाइड हो अपने आप से और अपनी एबिलिटीज से कि आप उसको कुछ, आप उसके बाद मेहनत ही नहीं करते हो कि उसको अपनी एबिलिटीज को और बढ़ाएं या इक्विप करें अपने आप को. तो दैट इज complacency. So you reach a level of when you reach a level of complacency, you are reaching a level of overconfidence that you don't need to change anything about yourself. You don't need to change or upgrade yourself. Okay, so upgrade करने की चाहत ही नहीं बचती. Okay, because you're so self satisfied. Okay, आप अपने परफॉर्मेंस से, अपने अपने आप से इतने satisfied हो कि आप उसके बाद फिर मेहनत लगाते ही नहीं हो. Okay, you don't try harder. Okay, so a feeling of calm satisfaction with your own abilities. Okay, or situation that prevents you from trying harder. Okay, so complacency nahi aana chahiye. Okay, you should become confident with your reading, but complacency nahi aana chahiye कि यार मैं तो कुछ भी पढ़ लेता हूँ, सब कुछ पढ़ लेता हूँ, मेरे से आराम से हो जाएगा. Okay, that should not come. Okay, और मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है. Okay, so complacency is, you should not become complacent. Okay, complacent and complacency is the noun form. Okay, हेलो मीर, आप बस गुड आफ्टरनून बोल के आप चले जाते हो. डायनामिक क्रिप्टो, हाय, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. रवनीत, salut, salut. Ça va bien? Comment ça va? Um, Vikyat, hello, Vikyat, hello. So, guys, please do not just say hi, hello, and go off after that. आपको sentences बनाना है. That is the point of this entire vocabulary. आपको बस सुनना नहीं है, वहां पर participate भी करना है. So please make sure that you are participating in making sentences. Okay. गुरनूर, oh my God, everyone is present today. गुरनूर, कहाँ चले जाते हो आप यार बीच बीच में? Where do you go? एंड आई डोंट सी सेंटेंसेस दीज डेज. आप अगर पिछले साल का देखोगे हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, इतने सारे सेंटेंसेस बनते थे, लोग, everyone used to try, and these days I don't see that happening. Please make sure that you're making sentences with the words that you know or you don't know. Please make sure that you're making sentences. Okay, because that's how you learn.
words. Okay, this is your opportunity of learning new words, so please make sure that you give your best shot. Okay. Meow meow. Okay. Ashante. आ गए मैम, आ गए, गुस्सा नहीं प्लीज. An encomium speech given by ranker this shanker, the shanker on the occasion of Teachers' Day stoked hatred among the students. Wow, wow, Piyush, good job. What annoys me about these girls is their complacency. Very nice, Shama, good job. After achieving early success, the athletes fell into a state of complacency. Very nice, neglecting further training and improvement. Very nice, good job. A feeling of complacency was developed in me when I scored 90 marks in GK, highest in the class. Yes, so that should not happen. Okay. गुरनूर, ये बीच बीच में जो नहीं आ रहे वो गलत कर रहे हो आप. हर दिन आना है. ओके. देन वी हैव प्रॉक्सी. ओके, प्रॉक्सी. प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सी इज बेसिकली नाउन. ओके, जिसका मतलब होता है अथॉरिटी गिवन टू अ पर्सन टू एक्ट फॉर समवन एल्स. ठीक है, अगर किसी को प्रॉक्सी बना के भेजा जा रहा है, दैट मीन्स उनको अथॉरिटी दी जा रही है कि यू कैन वोट इन प्लेस ऑफ मी और यू कैन बी प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ मी. ओके, दैट इज proxy, such as by voting for them in an election or the person who this authority is given to. Oh, thank you for the heart. All right. दैट इज प्रॉक्सी. ओके, सो हम प्रॉक्सी क्लास में भी बोलते हैं एक दूसरे को अटेंडेंस का प्रॉक्सी लगाने. जनरली कॉलेज में ऐसा होता है, लोग प्रॉक्सी लगा देते हैं एक दूसरे का. Okay, which should not be the case. Okay, you should not give authority to someone else to be present for you. Okay, because obviously you are not the same. Voting rights, probably yes, you can give proxy, but not as attending the session. Okay, for you. Okay, so that is proxy. Then we have reckon. Oh, yes, ये अच्छी बात नहीं है, गुरनूर. रेकिन इज अनदर वर्ब. ओके, रेकिन का मतलब बहुत कुछ होता है. ओके, थिंकिंग थिंकिंग इज ऑल्सो रेकनिंग. ओके, देन टू कैलकुलेट एन अमाउंट इज ऑल्सो रेकन. जब भी फाइनेंस के केस में यूज हो रहा है, ओके, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंस, ओके, और द कंट्रीज फाइनेंस, अगर उसमें रेकन यूज हो रहा है तो इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू कैलकुलेट एन अमाउंट. ओके, सो रेकिन, reckoning, reckons, all this form you can change it because it is a verb form. Okay, then splice is also a verb form. Okay, तो बेसिकली स्प्लाइस करना मतलब क्या होता है? दो पीस ऑफ रोप को, ओके, ज्वाइन करके उनको एक लंबा रोप बनाना. ओके, मेक इट अ लॉन्ग पीस. ओके, दैट इज टू स्प्लाइस. ओके, स्प्लाइस इज नॉट स्लाइस, इट इज ऑपोजिट ऑफ स्लाइस. ओके, टू ज्वाइन टू पीस ऑफ रोप, film, etc., okay, together at their ends in order to form one long piece. Okay, that is to splice. Okay, so splicing, splices, all right, all these forms you can change it into. Okay, the CEO expressed his gratitude in an encomium for the hard work and dedication of the entire team. Very nice, Ashu. Good job. Good job. बोर्ड की तैयारी भी चल रही है साथ साथ में, तो इसलिए. ओके, ऑल द बेस्ट देन. ऑल द बेस्ट. योर प्रॉक्सी may attend the class if you are unable to attend. That's exactly what the opposite of what I am saying. You should not. You should not.
क्षमा इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट मैं बोल रही हूँ और आप उसी पे सेंटेंस बना रहे हो बट नाइस क्षमा गुड जॉब देन वी हैव हॉबल हॉबल Hobble is a verb form, okay, which means to limit something or control the freedom of someone, okay. So to hobble is to limit something या किसी basically किसी चीज को limit करना, okay. So hobble something is to limit something या किसी का freedom को limit करना, okay. किसी का freedom को कम करना या limit कर देना, okay, कि constraint लगा देना, okay. So the next word is constraint, okay, which is similar to hobble, okay. Constraint is the noun form, okay. Many constraints, okay. At home parents ensure that they apply a lot of constraints on their kids, okay, children, kids, okay. So something that controls what you do by keeping you with particular limits, okay. So within limits, within particular limits, okay. So constraint is basically अगर मैं आप पे constraints लगा रही हूँ तो आपको control कर रही हूँ by keeping certain limits, okay. So there are certain constraints in this policy that you must be aware of, okay. Policy में constraints हो सकती हैं कोई किसी किसी राइट में कंस्ट्रेंट्स हो सकती हैं, ओके. सो बेसिकली लिमिटिंग someone's freedom, again hobble and constraints are very very similar, okay. So the words that we looked at is encomium, stroke, sorry, not stroke, stoke, complacency, proxy, reckon, splice, hobble and constraint, all right. The CEO expressed his gratitude in an encomium, ये वाला मैंने पढ़ लिया था, okay. Proxy भी पढ़ लिया था. When my friend was beaten by a bad boy, my other friends stoked him for saying Ben Stokes to him. Huh? What? Somesh, I did not get this one. ये क्या लिखा है आपने? Try again. Rephrase it. Piyush, after self-studying for such a long time, your class makes my study environment more complacent and satisfied. Very nice, Piyush. Good job. He tried to increase his height by cutting the legs of a stranger and splicing to his. God, good Lord. All right, okay. लोग भाग जाएंगे जरूर इसीलिए no wonder nobody is coming to the class. During the school assembly, the principal delivered an encomium which filled our souls with complacency, leading to failure in our exam. Good job. I mean, sentence is absolutely fine. Okay. Okay. Shubhra, the sentence is fine, but बहुत ही इसका result बहुत ही this is funny. शुभ्रा इतना confidence बढ़ा दिया कि सबको ही fail हो गए. Okay. So see, too much motivation is also not a good thing. Okay, next is tardy. Okay, tardy का मतलब होता है it is an adjective. Okay, tardy is an adjective. Tardigrade एक there is like a microscopic a creature as well जो एक small teddy bear type दिखता है. It looks really cute and it has got like a but it can survive an apocalypse. It can survive in space. It is the only microorganism that can do that is resistant to a lot of heat as well. So tardigrade, okay. So tardy का मतलब क्या होता है? Tardy का मतलब slow होता है or late in happening or arriving, okay. Something that is slow, late, lateef, okay, that is tardy, okay. So adjective hai, so you can use it before a noun, okay. So slow or late in happening or arriving, all right. Then we have subsidy. Apurva, sweetheart, kahan thi aap? Good afternoon, Apurva. Good afternoon. Tari is cute and invincible both at same time. Tardigrade.
the creature that you're talking about, that is not tardy, that is tardigrade. Okay, tardy is slow or late in happening or arriving. Okay, so that is not cute at all. Being late in happening or arriving is not cute. It is not considered cute. It is not considered hygienic. Okay. uh there are few legal consultants on the sale of firearms in the US. What, Shama? There are few legal consultants on the sale of firearms in the US. But what are we talking about over here? What is the word? What is the word? Shama, word कौन सा है? Ravneet, the leading newspaper published an encomium for the speech given by the parliamentarian. That speech which, again, you have also used stroked, okay? And that's the problem, which stoked the idea of intolerance. If the such likha आपने, if such a renowned paper can publish such things without reckoning the effect it has on general public, it is a threat for us. However, they can't be stopped from publishing this kind of stuff, either because kind of, okay, kinda is colloquial, okay, kind of stuff, kind this kind of material, either because that would be hobbling their right. So either when you say, then there has to be or as well, or by something something, right? We must find out ways to make sure that there is no hate creating stuff made public without having to constraints their right, without having any constraints on their right. We do need new losses at this point. Being complacent with the existing is not the choice. uh Ravneet, this time thoda sa I'm not happy because it did not make a lot of sense. Ravneet, आप एक बार फिर से try कीजिए. I want you to try once again, okay? Because I know you can do it. And lot of usage of stuff and kinda today, okay? So do not make it informal. Try making it a little more formal, okay? आप बातें आप सही कर रहे हो, okay? Your line of thought is fine, but the words that you're using are not that great today. And in the end, it just made little sense. Sorry. Tardy means my morning routine just starts after getting up from my bed. What? Piyush, I apologize for being tardy to the meeting. Unexpected traffic caused a delay in my arrival. Very nice, Ashu. Good job. Okay, so you're already preparing for being late for your meetings. Okay, I see that. सब्सिडी. ओके, सब्सिडी क्या होता है? इट इज अ नाउन फॉर्म. ओके, इसका प्लूरल होता है सब्सिडीज. ओके, सो मनी गिवन एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ समथिंग टू हेल्प इनकरेज इट टू हैपन. ओके, सो मनी गिवन एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ समथिंग. ओके, सो बेसिकली गवर्नमेंट क्या करता है? सब्सिडाइज करता है प्रोडक्ट्स को. ओके, इफ द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सब्सिडी ऑन समथिंग, दैट मीन्स इट इज गिविंग अ पार्ट of the cost. Okay, so that people buy, encourage it to happen. Okay, so that people also help it happen. Okay, or the government is helping it happen. Okay, so that is to give subsidy. Okay, unpalatable. Okay, now palate is your taste buds. Okay, so unpalatable is the adjective form. अगर इसी को हम unpalatably कर दें तो वो adverb form हो जाएगा. Okay, so this is adjective, and unpalatable fact
or idea is unpleasant, okay, something that is unpleasant or shocking and therefore difficult to accept, okay. So unpalatable is something that is जो पचता नहीं है और जो हजम नहीं होता है, ओके. सो अनपैलेटेबल इज समथिंग दैट इज अनप्लेजेंट, इतना अनप्लेजेंट है या इतना शॉकिंग है कि आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, ओके. इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट इट, ओके. देन वी हैव इनहेरिट. इनहेरिट इज टू रिसीव मनी. ये तो आपको पता ही होगा इनहेरिट का मतलब. इनहेरिट इज टू रिसीव मनी, अ हाउस एक्सेट्रा फ्रॉम समवन आफ्टर दे हैव डाइड, ओके. दैट इज टू इनहेरिट, ओके. Vehemently, okay. Vehemently is an adverb. Vehemently, okay. So vehemently in a strong and emotional way, okay. So vehemently when you're saying something vehemently, okay. Vehemently अगर आप कोई चीज बोल रहे हैं तो आप बहुत strong और बहुत emotional होके कोई चीज बोल रहे हो, okay. You feel a lot about that particular thing, okay. I becomes Somesh, I become so tardy, like a sloth, when mummy asked me to bring flour from the flour mill. Yes, Somesh, I know. Very nice. Good job. Now that is fine. Shama, the state subsidizes housing for low income families. Very nice. Shama, absolutely correct. Soft or simple. Very nice. Yes, soft palate and hard palate in our mouth. Hmm. I am grateful for the subsidy provided by the government, which significantly reduced the financial burden of my education. Very nice, Ashu. Good job. Vikhyat, government provides subsidy in, because government is considered singular subject, okay. So provides ho jayega, the verb will be provides subsidy in cost of LPG to help and uplift weaker section of the society. Very nice, Vikhyat. Good job. What about the others? Piyush, Gurnur, Apurva, what about you guys? Why am I not seeing sentences? And Mir? All right. Then we have commendable. Something that is commendable is something that deserves कि आप उसकी बड़ाई करें. Okay, that is commendable. Okay, so the sentences that Ravneet has been making from the past few days are commendable. Okay, that means it deserves praises. Okay, or Ashu for that matter, or Shama for that matter. Okay, so the sentences that Ravneet, Shama, and Ashu have been making from the past few days are commendable. Okay, that means they deserve praises. Okay, so this is also a very nice word. Okay, deserving praise मतलब deserving जिसका जिसमें बड़ाई तो बनता है. Okay, ऐसे चीजों को कहते हैं commendable. Okay, all right. Progressively, then ly आ रहा है, देखो इसमें progressive mentality. Okay, progressive is the adjective form, progressively is the adverb form. ly आ रहा है तो naturally it will be adverb. So progressively is gradually. Okay, progressively is gradually. Okay, equitable is an adjective जिसका ये word हमने word power made easy में भी discuss किया है. Aqueous से आया है. Aqueous is equal. Okay, aqueous is equal. Okay, and able आ रहा है उसमें साथ में. So basically treating everyone fairly and in the same way. Okay, so equitable is equal, with equal temperament, with equal mood. Okay, so treating everyone fairly and in the same way is equitable. Okay, then we have compliance. Compliance का मतलब क्या होता है? Compliance. Okay, comply karna. Okay, comply is the verb form, compliance is the noun form. The act of obeying a law or rule, especially one that controls a particular industry or type of work. Okay, so compliance is the act of obeying a law or rule. ठीक है, comply karna is to obey karna. Okay, obey karna. Okay, so compliance is the act of obeying a law or rule, especially one that controls a particular industry or type of work. Okay, that is compliance. When Papa told us that we are not going to eat samosa chaat, instead of it we are going to eat litti chokha, it was really unpalatable for me. Very nice, Somesh. Good job.
Okay. Shubhra, the idea of genocide of Kashmiri Pandits by Pakistani militants is unpalatable to us. Very nice, Shubhra. Good job. Very nice. Good job. The tardy development, okay, T capital nahi hoga Piyush, but good choice of words. Tardy development in the field of agriculture in our periphery. Poor farmers vehemently asked, okay, there was tardy development in the field of agriculture in our periphery, full stop. Poor farmers were vehemently asked by the central government to subsid, subsidize, subsidize their food production. Okay, okay. Government provides subsidy in cost. Okay, विख्यात ने बना लिया था. Whenever relatives come to my house, my mother says to me, okay, whenever तो मतलब says, okay, जब भी आते हैं तो says, okay, so my mother says to me to meet them so vehemently that I cannot refuse. Okay, very nice. Very nice, Apurva. Good job. Good job, everyone. So compliance is also the act of obeying. So you become compliant to your mother in that case, right? So you comply with your mother's wishes in that case, right, Apurva, right? So that is compliance, okay? And then we have convoluted. Convoluted is something that is very twisted, okay? So very twisted is convoluted. Adjective form hai, okay? Convoluted. I know why, Gurnur. Can you tell me why क्यों नहीं send हो रहे गुरनूर? क्यों नहीं send हो रहे गुरनूर? से टाइप कर रही हूँ कोई मिस्टेक हो तो माफी. क्यों अपूर्वा क्या हो गया आपके दूसरे हाथ को? What happened to your other hand? The leading newspaper published an encomium siding with a speech given by the parliamentarian, a speech that stoked again stoked लिखा है आपने stoked the idea of intolerance. And if a renowned newspaper can publish an article like this without reckoning its effect on the general public, then होगा then नहीं होगा, then it is a threat for the peace of our country. However, India being a democratic country can't hobble their right of free speech. Hence, it is high time, not it is the high time, it is high time that our government comes up with new laws that can check on the hate speech without having to constrain one's right, okay? One's right, okay? One apostrophe s, having to constrain one's right. Being complacent with the existing laws is not the choice anymore, is not a choice anymore. Very nice, Ravneet. Now see the difference. So this is why I was saying that you can do better. And if I give you another turn, you will make it even better, I'm sure. But this is fantastic. Good job, Ravneet. Proud of you. Very nice. Uh, गब क्या गब्बर लिख गया. खाना खा रही. I thought something happened to your hand. गब्बर लिख. Okay, Apurva. So, Mesh, even though at the age of 11, writing a 2 or 3 page story titled The Strange Journey should be commendable, even though, then you should have still no one appreciated me, okay? Or yet no one appreciated me, okay? Not then also no one appreciated me, yet no one appreciated me, okay? Good job, Samesh. Rather than focusing on progressively encouraging commendable growth, rather than focusing on progressively
encouraging commendable growth rather than focusing on progressively encouraging commendable growth of the industrial sector. The government should be equitable in a manner that is palatable for each of us. Very nice, Pierce. See, you have also done it now. Now you guys are getting serious about your sentences. Very nice. Good job. My strict compliance with professional standards and ethical practices reflects my commitment to maintaining integrity and trust in my work. Very nice, very nice, Ashu. मजा आ गया पढ़ के वाह वाह. Fire है fire. Shama, it is an extremely convoluted process that will be unpopular with those who have to make it work. Very nice, Shama. Good job. Very nice. Vikyat, sustainable development goals is goals लिखा है ना, तो goals are the very commendable approach by uh, by us. Okay, so sustainable development goals are very commendable. Are commendable approaches by us for saving our environment. Okay, good job, Vikhyat. Good attempt, Shubhra. The work performed by Indian Space Research Organization in all of its mission is definitely commendable. Very nice, Shubhra. Very nice. Good job. UN. Okay. Oh, by UN for saving our environments. Sustainable development goals are commendable approach by the UN for saving our environment. Okay, Vikhyat. Yes, Ravneet. Someone needs to put a check on it, right? Good job. Then we have finally. Oh, no, no, these are words of the previous. Okay, so congratulations, our CLAT topper 2024, Yashasvi Dakar with All India rank 8, and these are our other top rankers who have made it to the top 80 NLU. Republic Day ka offer has been extended to 25. You can still get 25% off till today. Okay, today is the last day. You can use my code Vaishnavi10 to get more discounts and maximum discounts. स्टोर पे जाइएगा, टाइप कीजिएगा वैष्णवी 10, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट. क्लैट प्लस और आइकॉनिक दोनों में ये ऑफर अवेलेबल है 25% ऑफ आज तक के लिए. सो इट इज वैलिड टिल 31st January, that is today. CLAT knowledge bundle is here where you can, if you purchase a CLAT plus का subscription, आज अगर आप खरीदते क्लैट प्लस का सब्सक्रिप्शन, देन यू गेट फ्री प्रिंटेड स्टडी मटेरियल डिलीवर्ड राइट एट योर डोर स्टेप. दिस ऑफर वाज नेवर वैलिड फॉर प्लस subscribers, but it is right now. Okay, so plus subscribers, this is once in a lifetime opportunity for you. Offer valid till 31st January again. Okay, that is today. Restart is an ultimate test series pack for other law entrance test 2024. You can get 30 in this. You get 33 full length mock test. Okay, SLAT, MHCT, LSAT, CUET 5 year, CULEE, AILLET. इन सब के लिए प्रेपरेशन के लिए 33 फुल एंड मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो टेस्ट लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चंस पे बेस्ड है. डिटेल पेपर एनालिसिस भी मिलेगा आपको पोस्ट टेस्ट, एंड दिस इज अवेलेबल एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ, करेंट प्राइस इसका 5555 है, बट अनलॉक प्राइस इफ यू यूज माय कोड दैट इज Vaishnavi10, तो आपको 4166 पे मिलेगा, एंड दिस ऑफर इज ओनली वैलिड टिल टुडे, सो hurry up. So these are the ultimate test series package का schedule ये है. Please make sure that you look at the schedule because there are a lot of mocks that are going to happen in February as well as in March. Okay. Spartan batch is a batch for CLAT and ALET. You can use my code Vaishnavi10 to enroll in this batch. CLAT Iconic program के फायदे ये हैं कि that you get everything that you get in plus live mentoring session मिलता है, detailed physical notes that will be delivered right at your doorstep, printed full and mock test that will be delivered right at your doorstep. Okay, so let's get started with the editorial. Pens and highlighters out, everyone. Pens and highlighters out. Economic encomium. Okay, so economic
encomium मतलब economic conditions की बढ़ाई हुई है. Okay, this is the title that is given. Now let's look at the conclusion. A glowing 10-year report card must not stoke complacency. Okay, अब जो ये जो shining 10-year report card मिला है. Okay, so basically it is something that is positive. Okay, that 10-year report card मिला है. Okay, which is glowing. Okay, ये इसके वजह से इतना complacency नहीं आना चाहिए. Okay, so this becomes the conclusion. What is this? What is happening? What the hell? What the hell? What the hell? Jeez, not going to touch. Oh my God. Delicate. What is happening? Very nice, Apurva. I'm so glad. I'm proud of you. हटा दो इंस्टा का जितना भी नशा है सब हटा दो. ओके यू विल सी दैट द पहले 2-3 दिन यू विल बी लाइक एन एडिक्ट हु इज स्ट्रगलिंग टू गेट ऑफ इट, लेकिन उसके बाद यू विल सी हाउ मेनी बेनिफिट्स इट हैज गॉट. ओके सो इंस्टा हैज नथिंग for you, okay, or for anyone. Okay, nothing great comes out of it. Okay, so let's get started with the main idea. भूत आ गया. Ahead of the interim budget for 2024-25 on Thursday, the Finance Ministry's 10-year review of the economy with some forward outlook serves as a proxy to the annual economic survey. Okay, so basically अब budget आने वाला, interim budget आने वाला 24-25 का. Okay, which Thursday को आने वाला है. तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का 10-year रिव्यू जो उन्होंने किया है. ओके, ये दिस इज रिव्यू के साथ साथ उन्होंने कुछ फॉरवर्ड आउटलुक भी दिया है. ओके, कि कैसा फ्यूचर होगा, हाउ डज द फ्यूचर लुक. ओके, उसके बारे में भी बताया है. ये एक प्रॉक्सी की तरह सर्व कर रहा है एनुअल इकोनॉमिक सर्वे का. ओके, सो इट इज कमिंग इन प्लेस ऑफ एनुअल इकोनॉमिक सर्वे. ओके, सो दिस बिकम्स द मेन आइडिया. I don't know why I tried that. I just wanted to try it because it. Anywho, let me just remove this, okay, and write it again. All right. Okay. क्या करूं? Oh, ladies, आदत से मजबूर. Okay. अपूर्वा, बुक खोलो, एक वर्ड पढ़ो, फिर उसका मीनिंग पढ़ो, धीरे धीरे पूरी बुक खत्म हो जाएगी. What? नहीं, जो इंस्टा का भी यूज नहीं किया. वेरी नाइस पीयूष, प्राउड ऑफ यू एज वेल. ऐसे लोग बहुत ही हाई विल पावर चाहिए ऐसे लोगों के लिए. ओके, आई डेफिनेटली दिस एक्ट ऑफ योर्स इज कमेंडेबल. ऐसे लोग जो ट्रेंडिंग चीजों को नहीं फॉलो करते. ओके, दैट इज समथिंग दैट मस्ट बी अप्रिशिएटेड. यू हैव गॉट विल पावर बड़ी. ओके, the review signals GDP will grow close to 7% in 24-25 with scope to go well above 7% in 2030. Okay, तो basically अब review का signal क्या आ रहा है कि ये जो forward outlook इन्होंने दिया था ना, उसमें क्या बोल रहे हैं कि GDP 7% will grow close to. जीडीपी कितना ग्रो कर जाएगा? 7% तक ग्रो कर जाएगा 2024-25 में. और इसका स्कोप रहेगा कि अबव 7% भी रहेगा 2030 तक. 7% से भी ऊपर क्रॉस कर जाएगा. फ्रॉम about $3.7 trillion this year, India's economy will expand to $5 trillion in the 3 years, making it the world's third largest and could hit the $7 trillion mark
बाय 2030, ओके, इट रेकन्स, ओके, ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है, ये फॉरवर्ड आउटलुक दिया है इन्होंने, ओके। सो दिस इज द डिटेल्ड, ये प्रिमाइस हो गया, ओके, बेसिकली फैक्ट्स नंबर्स दिए जा रहे हैं, तो ये आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर ऐसा एंटिसिपेट कर रहे हैं ये लोग, ओके, ऐसा कैलकुलेट करे कि 2030 में $7 ट्रिलियन को भी मार्क को भी क्रॉस कर जाएगा बाय 2030, और अभी जो $3.7 ट्रिलियन है वो हो जाएगा $5 ट्रिलियन इन द नेक्स्ट 3 years, और ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, ओके। स्प्लाइसिंग इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इन टू फेजेस, ओके, अगर हम दो फेजेस को जोड़े, ओके, दैट इज 1950 टू 2014 एंड अ डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ सिंस 2014, और 10 साल का ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ इन सिंस 2014, इन दोनों को जोड़ा जाए। So the review stresses that the state of economy was far from encouraging when Prime Minister Narendra Modi assumed power. Okay, और the review, ये review में ये भी stress किया गया है कि the review stresses, क्या चीज के ऊपर जोर डाला गया है कि जो economy का state था वो बहुत encouraging नहीं था before Prime Minister नरेंद्र मोदी power assume किए, उससे पहले तक का encouraging state नहीं था growth का, okay। Growth was hobbled by structural constraint such as tardy decision making, ill-targeted subsidies, and a large informal sector, while inflation was unpalatably high. Okay, so these were the problems before ऐसा बोला जा रहा था, okay, इस इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा बोला गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पावर जब से अज्यूम किया उससे पहले बहुत सारे ग्रोथ पे कंस्ट्रेंट्स थे, ओके, बहुत सारे लिमिटिंग फैक्टर्स थे, बहुत स्लो डिसीजन मेकिंग थी, इल टारगेटेड, मतलब सही जगह टारगेट नहीं किया गया था सब्सिडीज को, ओके, एंड जो इन्फ्लेशन था वो भी बहुत भयंकर हाई था, ओके, समथिंग दैट वाज अनडिजायरेबल, ओके। पोस्ट 2014 रिफॉर्म्स हैव रिस्टोर्ड द इकोनॉमीज एबिलिटी टू ग्रो हेल्थीली with longer and stronger longer and stronger सुरक्षित काल है मेरे, sorry, longer and stronger economic and financial cycles, and made India the fastest growing G20 nations, it argues, okay। So what is being said is कि देखो ये बोला जा रहा है कि ये जो 2014 के बाद लेकिन जो इकोनॉमी रिस्टोर हुआ है, ओके, इकोनॉमी का एबिलिटी बहुत हेल्दी वे में बढ़ रहा है, ओके, एंड इट हैज बिकम लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, ओके। फाइनेंशियल साइकिल बेटर हो गए हैं। इंडिया हैज ग्रोन G20 नेशंस में फास्टेस्ट ग्रोइंग है, ओके, जितने भी G20 नेशंस में है उसमें से फास्टेस्ट ग्रोइंग है, ऐसा वो कह रहे हैं, ओके। द रिव्यू asserts that India's 7% growth when the world is growing 2% is qualitatively superior to 8 to 9% achieved when the global economy grows 4%, perhaps hinting at a few years of the UPA era, okay। So basically क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ग्लोबल इकोनॉमी 2% ग्रो कर रही है और इंडिया उस टाइम 7% का ग्रोथ दिखा रही है, तो दैट इज क्वालिटेटिवली सुपीरियर, ओके, वो क्वालिटेटिवली सुपीरियर है देन जो पहले 8 to 9% ग्रो कर रही थी जब ग्लोबल इकोनॉमी 4% ग्रो कर रही थी, तो दैट, सो बेसिकली इसमें क्वालिटी का फर्क है, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, एंड दे आर हिंटिंग दैट अगेन दिस वाज बिकॉज ऑफ द यूपीए एरा, ओके। दिस इज डिबेटेबल एज, अब देखो ये वाला जो पॉइंट इन्होंने बोला है ना, ये पहले ऑथर ने बता दिया क्या क्या ये कह रहे हैं, ओके, और उसके बाद फिर ऑथर बोल रहा है कि ये डिबेटेबल है एज इंडियाज इकोनॉमी इज जनरली डीलिंक्ड फ्रॉम द वर्ल्ड विद डोमेस्टिक एक्टिविटी ड्राइविंग ग्रोथ मोर देन एक्सपोर्ट्स, ओके। तो ये चीज डिबेटेबल है इसलिए क्योंकि इंडिया का जो इकोनॉमी है वो लिंक्ड नहीं है ग्लोबल इकोनॉमी से, ओके, क्योंकि बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो डोमेस्टिक एक्टिविटी की वजह से होती है, जो दैट इज नॉट रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स, ओके। ओके, now that the twin balance sheet problem inherited from the UPA days
has turned into an advantage. As the review stresses, it must translate into a wider private investment revival. Okay, तो अब बोल रहा है कि अब ये जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, ओके, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम जो इनहेरिट किया गया था यूपीए डेज से, ओके, अब इसका एडवांटेज, अब दिस हैज टू बी टर्न इनटू एन एडवांटेज, ऐसा ये रिव्यू स्टेट कर रही है, ओके, स्ट्रेस कर रही है। और इसका मतलब क्या होगा कि दिस विल ट्रांसलेट इनटू वाइडर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ओके, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिवाइवल होने लगेगा, ओके। सॉरी। That would hinge on a broad-based consumption rebound rather than the K-shaped recovery the government vehemently dismisses. Okay, तो ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? ब्रॉड-बेस्ड कंजम्पशन पे डिपेंड करेगा, ओके। ना कि ये जो के शेप्ड रिकवरी जो दिखा रहा है इस पे नहीं डिपेंड करेगा, ओके। जो गवर्नमेंट दिखा रहा है बहुत वेहेमेंटली डिसमिस कर रहा है, इस पे नहीं डिपेंड करेगा, इट इज ब्रॉड बेस्ड कंजम्पशन पे डिपेंड करेगा। दिस विल hinge on, okay, private investment revival will hinge on broad based consumption, okay। 4 years of 7+ growth post pandemic would be commendable indeed, okay। अगर 4 साल तक 7% प्लस ग्रोथ हो रहा है पोस्ट पैंडेमिक, तो दैट वुड बी समथिंग, हाँ वो बड़ा, इट विल डिजर्व सम प्रेजेस, ओके, इट डेफिनेटली डिजर्व सम प्रेजेस। हाउएवर, India needs to grow faster to create jobs at the scale its youth needs to ensure that a rising growth tide lifts most boats if not all, okay। So basically अब ऑथर बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि इंडिया को अपना ग्रोथ फास्टर करना पड़ेगा, ओके, ताकि वो क्रिएट कर सके जॉब्स फॉर द यूथ, ओके, एट अ लार्जर स्केल, ओके, ताकि rising growth के साथ it also lifts, okay, the economy also lifts, okay, if there is at all a lift, okay। The review expects an all-inclusive welfare approach to help enlarge the consumption base by expanding the middle class, okay। तो basically अब ये review क्या बोल रहा है? review के हिसाब से द रिव्यू क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर अप्रोच अब ये लगाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? दैट विल इनलार्ज कंजम्पशन बढ़ाएगा बेस्ड बाय एक्सपैंडिंग द मिडिल क्लास को एक्सपैंड करेगा, ओके। बट दोज डिपेंडेंट ऑन हैंडआउट्स such as the 800 million that need free food by the center's reckoning must progressively shrink for growth to be meaningful and equitable, okay। लेकिन, okay, but again there is a contradiction कि जो लोग 800 मिलियन, ओके, 800 मिलियन लोग जो फ्री फूड पे डिपेंड करते हैं, सेंटर के फ्री फूड पे डिपेंड करते हैं, उनको भी प्रोग्रेसिवली श्रिंक करना होगा, ये नंबर को भी श्रिंक करना होगा ताकि इक्वल और मीनिंगफुल ग्रोथ हो पाए, ओके। द रिपोर्ट राइटली मेंशंस reforms in learning outcomes, health, easier compliances for smaller firms as priorities, with some critical changes at the sub-national government level to accelerate growth, okay। So it rightly mentions these कि ये वाले section में it is critical to prioritize these sections, okay। It is also essential, okay, तो ये सर्वे सही बोल रहा है कि ये वाले sections पे ध्यान देने जरूरी है, okay। It is also essential that flaws in reforms such as GST are fixed, okay। ऐसे flaws जो जैसे कि GST में जो flaws है वो fix हो जाए, okay, it is very essential। And some of the blunt policy tools deployed, for instance, import license and price control on deregulated products that send convoluted signals about India's open market with predictable policies pitch are reconsidered, okay। लेकिन और एक चीज essential है कि ये कुछ ऐसे flaws जो है हमारे GST में, okay, सॉरी, कुछ ऐसे फ्लॉज को सही किया जाए, ओके, उनको रिफॉर्म किया जाए, इसका जरूरत है। और एग्जाम्पल किसका दे रहा है? जीएसटी को फिक्स करने की जरूरत है, ओके। जीएसटी आर सच एज जीएसटी आर फिक्स्ड, एंड ये जो
फिक्स जीएसटी, इसको फिक्स करने की जरूरत है, ओके। एंड सम ऑफ द ब्लंट पॉलिसी टूल्स डिप्लॉयड, ओके। जो ब्लंट पॉलिसी टूल्स है, जैसे कि इंपोर्ट लाइसेंसेस अभी जो स्टार्ट हुआ था, प्राइस कंट्रोल्स जो स्टार्ट हुआ था, इनको डीरेगुलेट करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स पे, ओके। ताकि मिक्स्ड मैसेज, मिक्स सिग्नल्स नहीं, बिकॉज दीज आर ट्विस्टेड सिग्नल्स, ओके, दैट सेंड ट्विस्टेड सिग्नल्स अबाउट इंडिया। बोल रहा है कि हम ओपन मार्केट है विद प्रेडिक्टेबल पॉलिसीज है, लेकिन अब ये ट्विस्टेड है बिकॉज देर आर इंपोर्ट लाइसेंसेस एंड प्राइस कंट्रोल्स। ये सब चीज को हटाना पड़ेगा, इनको डीरेगुलेट करना पड़ेगा, ओके, ताकि मिक्स सिग्नल्स नहीं जाए इंडिया के इकोनॉमी की तरफ, ओके। एंड प्रिडिक्टेबल पॉलिसीज पे ये सारी चीज को रिकंसिडर करने की जरूरत है। ऑल राइट, सो दिस इज द entire editorial. So what will be the tone? Yes, analytical, definitely analytical. All right, analytical. Mm, concerned, not really concerned. Advisory कह सकते हैं, right? Informative नहीं, okay. Informative, first paragraph could be, this entire thing is completely informative, okay. This is just talking about information, okay. So first paragraph is informative, next paragraph onwards the author is talking about कि क्या जरूरत है, क्या advice उनके side से है। कुछ कुछ चीजें जो बता रहा है कि सही बोला है, कुछ कुछ चीजें जिसपे that is debatable, okay. So the author is analyzing, okay, इससे पता चलता है analyze कर रहे हैं, देखो this is debatable, the author is saying, okay. Then the author is saying it is rightly said कि ये वाला is required, okay, it is rightly said, the report rightly mentions, okay, the report rightly mentions. So this is basically an analysis कर रहा है, okay. And finally यहाँ से the author is talking about कि क्या क्या चीज को बदलने की जरूरत है, okay. So this is advisory, okay. So that is it for today. Appreciative, not so much, because the author is just talking about कि कैसे इन्होंने appreciate किया, okay, that this would be commendable, that would, so this part would be good, okay, this part would not be good, ऐसा बस author बोला है, okay. But basically the economic survey is the one that is praising, okay. Economic encomium is the, so basically the finance ministry is praising, not the author, okay. The author is just saying this is good, this is good. So sort of you can say appreciative as well, ठीक है, okay. All right, that is it for for today. Thank you everyone for attending the session. Bye bye now, take care, auf wiedersehen, maxi, maxi bekoop, and मैम इन्फ्लुएंस ऑफ द पैसेज बता दीजिए प्लीज इस एडिटोरियल के। राही, बेसिकली इन्फ्लुएंस क्या होगा कि द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट कि कैसे ये जो बजट अनाउंस हुआ है दैट लुक्स प्रॉमिसिंग फॉर इंडिया, ओके। और कुछ कुछ चीजें जो इंडिया को करने की जरूरत है उसके ऊपर एडवाइस किया है, ओके। सो दिस लुक्स प्रॉमिसिंग, ओके, द सर्वे लुक्स, इकोनॉमिक सर्वे लुक्स प्रॉमिसिंग, हाउएवर देयर आर थिंग्स दैट नीड्स टू बी taken care of, so that India ka market looks like an open market, okay. So that is it, okay. Hope for everyone, and bizu.